Hello everyone. Am I audible? Yes. Yeah. Hi Karthik and hi Rishan. It's your first class, right? Yes. Oh, sure. So where do you guys belong from? Karthik. Let's start with Karthik. Sir, I'm from Tamil Nadu. Okay. And what about Rishan? Rishan, am I audible? From where do you belong? Okay. So first question is, are you guys preparing for anything other than CBSE? Like, are you preparing for JEE? Yes, sir. G. JEE. Okay. And what about Rishan? Rishan, can you hear me? Am I audible? Okay. So you are also preparing for JEE, Rishan? Okay. Okay. And what's the syllabus? You please type and till then, Karthik, you tell me what have you done in maths yet? Like on which chapter you are going? What are the chapters that you have covered yet? Okay. Okay, Rishan. Okay, cool. So you can actually attempt JEE, but yeah, it's your choice. Guys, just give me a minute. Hello, guys. Am I audible? Yes, sir. Okay. So Karthik, what have you covered yet in your math syllabus? Like, what are the chapters that you've covered? Sir, we finished all the chapters before 3D geometry. 3D geometry. Okay. Yes, sir. Okay. And so first book is completed, right? Yes, sir. And integration is also complete. Yes, sir. Okay. And 3D means that you only have two chapters left, probability and LPP. Am I correct? Yes, sir. Okay. So we were doing in the last class, we were doing differentiation, and we wanted to discuss. Afifa, have you solved some problems? Do you have do you face any problems? I have faced problem in the last question. Question number Just tell me 10. the question. Yeah. निशांत, तब तक तुम मेरे को बताओ सिलेबस में तुमने क्या कवर किया अब तक मैथ्स में? आई मीन कौन सा चैप्टर चल रहा है?
Rishan will anyway tell me on chat, so if you can continue with the question. The question is prove that the greatest integer function Okay. defined by f of x equals to x modulus, Okay. where x is greater than 0 and lesser than 3, is not Is it differentiable modulus at or is it no? Is it modulus or is it greatest integer function? It should be greatest greatest integer. integer function. Yeah. Okay. Is not differentiable at x equals to 1 and x equals to 2. Okay, so we have been given that x is in between 0 to 3. Am I correct? Yes, x is greater than 0 only. Okay, x is greater than 0 and less than 3. Yes. And we have to prove that fx is not differentiable at x is equals to 1 and x is equals to 2. Yes. Karthik, can you solve this? We have already studied differentiation. Can you tell me how Yes. will it? Okay, tell me. You can simply just tell me the logic. I'll solve the whole question, but you can simply tell me the logic, like how would you prove? Sir, I need to revise greatest integer function. Okay. So let me take you through this greatest integer function first. Yes. Then you can tell me the problems you have faced yesterday, if you faced any. So you can discuss the problem, like Afifa faced problem in this question. So we are discussing this, but after this you can also put up the questions in which you have problem. So greatest integer function, what does greatest integer function do is, so I'm going to write this GIF, greatest integer function. GIF makes any value an integer, any value. So let's say I put 4.9 inside these big brackets. So this is a symbol used for GIF. And if I put any value inside this inside these brackets, so what will they do is they'll change that value into the nearest integer. Which nearest? They'll change that value into the smallest integer of that number. So if I have been given 4.9, the answer should be 4. If I put an integer inside the GIF, so the job of GIF is to give an integral answer. If I put an integer inside it, its job is already done, because we already have an integer inside. So the answer should be 5 only. So if I put 4.01, the answer would be the smallest integer equal to or lesser than 4.01. So 4.01, the smallest integer is 4, the nearest smallest integer. So if I put 1.09, can you tell me what is the GIF of 1.09? So 1. What will be the GIF of 0.05? But it's minus, negative 0.05. Sir, 0. Not 0. So minus 1. minus, right. So we have to find the smallest integer to that value. The smallest will be minus 1. 0 is a greater integer. 0 will be greater than 0.0, minus 0.05. So the answer should be minus 1. So GIF, what does GIF do is it will convert the number into its nearest smallest integer, right? Now coming to the question, fx is equals to greatest integer function of x. We can also draw the graph, by the way. You should know the graph of GIF. We have already studied, everyone has studied this relation and function. So the graph of GIF is, whenever you put x0, the answer will be 0. If you put x 0.01, can you tell me the answer? So I'm going to iterate this. You have to tell me the answer of fx for all these values. So if x is 0, what will be fx? So 0. 0, right? So I'm going to make a table for you so that you can understand it clearly. Let's say this x is input and this fx is input. So if I put x0, fx will also be 0. If I put x as 0.5, what will be fx? 0.
if I put x 0.99, 0, and if I put x1 1. up to 2, if I put x in between 1 to 2, Then 1. 1. So that's the whole process actually. If you put x0, answer would be 0. But if you put x1, answer would be 1. So this is also known as stepwise function. GIF is also known as stepwise function. So in between 0 to 1, see, this line suggests that whenever x is in between 0 to 1, fx is 0. Whenever x is in between 1 to 2, it can be equal to 1, but it cannot be equal to 2, because if x is equal to 2, then fx would be 2. So if x is in between 1 to 2, fx would be 1. So basically this forms a staircase. This is known as stepwise. There are so many steps involved. And this will go through like this. The graph will be these stairs, and this is also known as stepwise function. Remember this. So we have been told that x is in between 0 to 3, right? यानी कि यहाँ से हम लोग यहाँ तक गए, from this point up to this point, and we have to prove that fx is not differentiable at x is equals to 1 and 2. So proving part is a different thing. But first, let me make you understand why it is not differentiable at x is equals to 1 and 2. Proving we will do. That's a theoretical process. We will do that. But what does this signify? Fx is not differentiable at x is equals to 1 and 2. And we can also check every differentiability and continuity with graph. The continuity and differentiability of a function describes its graph. So if you know the graph of any function, you also know the point of discontinuity and point of non-differentiability. I mean those points where the function is not continuous and the function is not differentiable. Just like in this example, at x is equals to 1 and 2, fx is not differentiable. So point of non-differentiability for fx in this question is x is equals to 1 and x is equals to 2. There are 2 points actually. So now let you guys understand first why this is not differentiable. So first of all, if your graph is discontinuous at some point, now what do you mean by discontinuity? Can someone explain what is discontinuity? Sir, if in the graph there is a break. Yeah, correct. So if you have to lift your pen while drawing a graph, then it means the graph is discontinuous. For example, if I draw this graph, I have to lift my pen to draw this second line. I cannot connect them both, right? So if the graph breaks at any point, that means the graph has a discontinuity. So graph has a discontinuity at x is equals to 1 because the graph broke here. At this point also x is equals to 2, at x is equals to 3 also, but I do not have to check x is equals to 3 because I have already been given that x is in between 0 to 3. So when x is in between 0 to 3, there are 2 points of discontinuity. First is this and second is this. So wherever the function is discontinuous, it is certain with probability 1, that is sure event. Wherever the graph of a function is discontinuous, it has to be non-differentiable. If the graph is not continuous, there is no point finding out whether it's differentiable or not. It has to be non-differentiable at that point. So wherever the graph of a function is discontinuous, the must be non-differentiable at those points. अब एक बहुत सिंपल टर्म्स में सॉरी कैन सम सॉरी
All of you guys can understand Hindi, right? Yes, sir. What about Rishan? Because sometimes I'll be speaking in Hindi. If you tell me, so I'll make sure that that doesn't happen. Rishan, do you understand Hindi? You can reply me in chat. So okay, so I was saying कि अभी अगर हम लोग 0 से 3 पे जाते हैं तो हमें पता चला 2 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी है. अब ना डिसकंटिन्यूटी का तो मतलब बहुत सिंपल है. डिसकंटिन्यूटी इज वेयर द ग्राफ ब्रेक. इफ यू हैव टू लिफ्ट योर पेन, इफ यू कैन नॉट draw the graph in one sitting, in a single time, तो आपका ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, राइट? बट व्हाट डज वी मीन बाय नॉन डिफरेंशिएबिलिटी? तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ दिखाता हूँ और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएबिलिटी में फटाफट से वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा. तो I have to remove these. This was just for your practice so that you can understand better how we are drawing this graph. So let's say I have this graph and this is like something like this. So what does differentiability and non-differentiability mean? Like in terms of physical significance, like what is differentiation? What does differentiation do? तो एक तो कल हमने बात करी थी, differentiation is basically change in one variable with respect to change in another variable. So if there are two variables depending on each other, something like this, y is equals to x square, and you want to find the change in y. If you change x, then that result can be carried out by using differentiation. So if you find out dy by dx, that means that you are trying to find out the change in y with respect to change in x. That's one significance of the differentiation. But another significance is कि अगर आपको कोई ग्राफ दिया जाता है और आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. सो लेट्स से आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इट मींस दैट यू कैन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट. तो डिफरेंशिएशन का सीधा सीधा रिलेशन होता है टेंजेंट से. तो इफ योर ग्राफ इज डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट, it means that the graph is there can be one tangent, and there will exactly be one tangent which can drawn at that point. आपको किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है फंक्शन, माने कि आप उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना सकते हैं और सिर्फ एक ही बना सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप उस पॉइंट पे दो टेंजेंट बना सकते हैं, नो. तो लेट्स से आई से at whether at this point the graph is differentiable or not. If I ask this question, they will say yes, the graph is differentiable. Why? Because we can make exactly one tangent at this point. You cannot make another tangent at this point. See, if you draw this, तो ये इस पॉइंट पे टेंजेंट नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा ऊपर है पॉइंट जिस पे हम टेंजेंट बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं. आप इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बना पाएंगे. इसका मतलब ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है. तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दें और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो पॉइंट हमारा बोला जाता है डिफरेंशिएबल, राइट? अब आते हैं जरा यहाँ पे. आपने देखा दो पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी है ग्राफ में. दोस्त अगर दो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है ग्राफ में, तो इट सर्टेनली मींस दैट यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स एट दैट पॉइंट. हाउ? चलो इसके तो थोड़ा सा देखना टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए. पहले एक बार मैं इसमें दिखाता हूं. तो फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज अ ग्राफ व्हिच इज डिसकंटिन्यूअस. क्लियरली यू कैन सी एक ग्राफ ऊपर तक खत्म हो गया, एक ग्राफ नीचे से स्टार्ट हो रहा है. सो इफ यू ड्रॉ टेंजेंट एट दीज पॉइंट्स, तो सी. अब इस वाले पॉइंट की बात करते हैं जिस पे डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि ये वाला पॉइंट, राइट? अगर मैं इस पे देखूं तो ऊपर वाले पे मैं एक टेंजेंट बना सकता हूं. देखो यहाँ पे इस तरीके से टेंजेंट बन जाएगी, और नीचे वाला ग्राफ ये है तो इस पे भी एक टेंजेंट बन जाएगी. बट पॉइंट तो दोनों सेम ही है. एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बन गए. वाई एंड वाई डिड दिस हैपन? क्योंकि दो ग्राफ थे अलग अलग. उसी पॉइंट पे आपने ऊपर वाले ग्राफ पे टेंजेंट बनाया तो कुछ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बना. सेम पॉइंट पे आपने नीचे वाले ग्राफ में टेंजेंट बनाया, यू गेट अ वर्टिकल टेंजेंट. सो एट सेम वन पॉइंट यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स. इट मींस दैट ग्राफ इज नॉन डिफरेंशिएबल. लेट्स से दिस पॉइंट इज x1. सो नॉन डिफरेंशिएबल at x is equals to x1. This is the physical significance of non-differentiability and differentiability. You can clearly see that there are two
two points, sorry, there are two tangents at this point also and at this point also. Now, what are those two tangents? First is this line which you have drawn, and second is this. These both are acting as tangents at these 2 points. So physical significance के according बिल्कुल differentiable नहीं है. But if I have to prove this, now how I am gonna prove this? Did you guys understand this? If you have any problem, please feel free to ask. Yes, sir. Afifa, did you understand this? What is the physical significance of differentiability? Yes. ठीक है, तो जब भी आपको देखना है आप टेंजेंट बना के देख लो सीधा सीधा. एक तो ये है रूल. चलिए अब बात ये कर लेते हैं, और इनफैक्ट इतने की भी जरूरत नहीं है. जो मैंने लिखा है ये की पॉइंट है हमारा, कि अगर आपका ग्राफ ही कंटिन्यूअस नहीं है तो आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने ही नहीं जाएंगे. अगर आपका ग्राफ कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ यानी कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी फिक्स है. बट अभी अगर हम प्रूव करने जाते हैं इसको, तो हाउ वुड वी प्रूव? तो डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करने के लिए कैन आई रिमूव दिस? इफ समवन इज राइटिंग प्लीज रेज योर हैंड, एंड इफ एवरीवन हैज रिटन यू नीड नॉट टू स्पीक. ओके, तो अगर कोई हैंड रेज नहीं करता है तो मैं फिर इसको रख कर. ओके कूल. आरिशान, हाँ ठीक है कूल. सॉरी, लिख ले. और जब लिख लेगा तो फिर खुद से हैंड डाउन कर लेना, तो आई विल गेट टू नो कि तूने लिख लिया. This was one way to solve this question. Okay, so I am assuming everybody has written, right? Now, another way to solve this question is, which we have to show in CBSE. In CBSE, we have to show this question like this. जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ. करने के लिए या आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल इस मेथड से जानने की जरूरत नहीं है जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. यू कैन इजीली सॉल्व दिस यूजिंग ग्राफ. ओके, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 and 2. सबसे पहले तो हाउ वुड यू डिफाइन डिफरेंशिएबिलिटी? सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, यू हैव टू थिंग्स. ये हमने लास्ट ईयर लिमिट्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ा भी था कि हाउ डू वी डिफाइन डिफरेंशिएबिलिटी. फर्स्ट इज LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, and second is right hand derivative. Now what are left hand derivative and right hand derivative is? So we can define any f dash x, we can define the differentiation of any function as limit h tends to 0 fx minus h minus fx divided by minus h. इन दोनों का डिफरेंस अंदर जो इनपुट है. तो बेसिकली दिस इज व्हाट दिस इज, आउटपुट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनपुट का डिफरेंस. इनपुट है हमारे पास x माइनस एच, एंड x दोनों का डिफरेंस निकालेंगे माइनस एच आ जाएगा, और आउटपुट होगा fx माइनस एच या fx. एक्चुअली अगर RHD की बात करें तो RHD कहता है राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि राइट हैंड साइड से हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं. ये हम लेफ्ट हैंड साइड से डेरिवेटिव निकाल रहे थे. अगर आपको याद हो तो LHL और RHL हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं x टेंड्स टू a नेगेटिव. अगर राइट हैंड लिमिट की हम बात करते हैं तो हम कुछ लिखते हैं x टेंड्स टू a पॉजिटिव. नाउ व्हाट डज a नेगेटिव मीन इज a माइनस h. What does a positive means is a plus h. a से बहुत थोड़ा सा बड़ा वैल्यू या a से बहुत थोड़ा सा छोटा वैल्यू. So right hand derivative would be limit h tends to 0. This changes to fx plus h minus fx divided by h. This is left hand derivative and this is right hand derivative. If some function is non-differentiable, it means that its LHD and RHD is not equal. So there are two conditions. If LHD and RHD are equal, means that function is differentiable.
at the certain point जिस पे भी आप निकालना चाहते हैं. And if LHD and RHD are not equal, then function is non-differentiable at that point. These are two key points. So I have to prove that fx is not differentiable at x is equals to 1 and x is equals to 2. So I'm going to prove for this for x is equals to 1. Then you can simply solve it similarly for x is equals to 2. So to find out the function's differentiability at x is equals to 1, we have to take x as 1 in LHD and RHD. Let's start. Can I remove this? Differentiability. Left hand derivative, right hand derivative. So I have to prove this for differentiability at x is equals to 1. First find LHD at x is equals to 1. Left hand derivative at x is equals to 1. Now after this you will first write the formula, like what is LHD. So after this to this, and then you will put x is equals to 1 in this formula. Hence f dash x should be, f dash 1 should be limit h tends to 0 f of 1 minus h minus f1 divided by minus h. And no, don't write this. So this would change to f dash x is equals to limit h tends to 0 f1 minus h should be, see, fx is greatest integer function of x. If you put 1 minus h instead of x, so what will it change to? It will change to 1 minus h का greatest integer function minus f1 यानी कि 1 का greatest integer function divided by minus h. Guys, can you help me with this? What's the value of 1 minus h का greatest integer function? 0. Why 0? So because 1 minus h will be some number which is 0 point something. 0 point something, which will be smaller than 1, right? Yes, sir. Which will be smaller than 1. So it means that the number would be 0.999, something like that. And the greatest integer function would be 0. Correct answer. So the answer should be 0 minus greatest integer function of 1 is 1 divided by minus h. So it should become 1 by h, right? And 1 by h, when you put h 0, the answer would be infinity. Now, to find out RHD at f dash x, I have written first the formula for RHD, which we gonna use. Then we have to put x is equals to 1. So f dash 1 according to RHD should be, जितने भी फॉर्मूले कल हमने लिखे थे क्लास में वो सब यहीं से आए हैं भाई. 1 plus h minus f1 divided by h. So it should be f dash 1 is equals to limit h tends to 0. f1 plus h would be 1 plus h का greatest integer function. Afifa, what would be 1 plus h का greatest integer function? What? Sorry? 1. 1, right? Because this time the value is greater than 1. If the value is greater than 1, this should be something like 1.00001, which the greatest integer function of which is 1. Hence, this changes to limit h tends to 0, 1 minus 1 divided by h, which is 0. See, you don't even need to put h.
because you already got the answer 0. 1 minus 1 is 0, 0 by h is 0. So RHD is 0, but LHD is infinity. Hence, LHD is not equals to RHD at x is equals to 1. समझ आया फीफा ये कैसे करना है सॉल्व? जितने भी कल फॉर्मूले प्रूव करे सारे इन्हीं से ही बने हैं। यही बेसिक रिजल्ट है जिसके थ्रू हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं। बट क्योंकि हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो आई ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी चेक फॉर कंटिन्यूटी। तो अभी मैंने बोला था कि इफ द ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट सम पॉइंट इट हैज टू बी नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मींस if someone tells you कि भाई ये ग्राफ है, this is not differentiable at x is equals to 4, then it may or may not be continuous at x is equals to 4. This is not certain कि जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस भी होगा, ये सर्टेन नहीं है। बट हाँ, अगर किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो श्योर है कि उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है तो ऐसा हो सकता है कि हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो। दोनों ही केसेस पॉसिबल है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपका किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल आया फंक्शन तो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस भी होना चाहिए, नहीं, हमेशा नहीं होगा। कैन समवन टेल मी एन एग्जांपल, वेरी कॉमन एग्जांपल? You have one example in which the function is continuous yet non-differentiable. Fx is equals to mod x. Okay, I'll tell you that property also. अब if ये second part हो जाएगा x is equals to 2 वाला, you have to follow the same procedure. LHD निकालने का है पहले, LHD में यहाँ पे 2 माइनस h आ जाएगा, और RHD निकालने का होगा, फिर यहाँ पे 2 प्लस h आ जाएगा। आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी आती है, जब आप निकालोगे LHD एंड RHD you will find out that the values are different for x is equals to 2 as well. Hence the function will not be differentiable at x is equals to 1 and x is equals to 2. Can you do that? Okay. Okay, can I remove this? If someone hasn't written, please raise your hand. And if you have any doubt, please ask me. Feel free to ask at any time. Just raise your hand and ask me. If I'm speaking, if I'm not speaking, so then you can ask me directly. Zen, कोई प्रॉब्लम फेस की? क्वेश्चंस लगाए? अच्छा, यहाँ पे हम ना ये बोल रहे हैं कि ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ना हमारे पास क्वेश्चन ये था कि आपको प्रूव करना है दैट fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड 2। तो पहले मैंने जैन ये बताया कि किस तरीके से हम ये दिखाते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। उसके लिए हमें दो काम करना पड़ता है। किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, और ये फॉर्मूला है राइट हैंड डेरिवेटिव का। ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। अगर दोनों इक्वल आते हैं
तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। अब इससे आगे की बात करते हैं कि हमने क्या किया। हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन। तो मैंने इसके अंदर एफ डैश वन मेरे को प्रूव करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल्स टू 1 एंड 2 पे। यानी कि अगर मैं x इक्वल्स टू 1 के लिए दिखा रहा हूं, x इक्वल्स टू 2 के लिए तेरे को सिमिलर प्रूव करना है। तो x इक्वल्स टू 1 के लिए मैंने LHD निकाला, तो मैंने x को 1 पुट कर दिया। ये देख, यहां पे वैल्यूज पुट करी तो ये बना 1 माइनस एच, ये बना F1 डिवाइडेड बाई माइनस एच। इसमें सीधा सीधा x को 1 पुट करा और इसमें सीधा सीधा x को 1 पुट करा, यानी कि x इक्वल्स टू 1 पे LHD भी निकाला और RHD भी निकाला। तो पहले तो ये फॉर्मूला लिखा जो फॉर्मूला होता है, उसके बाद ये वैल्यूज कैलकुलेट की। तो F1 माइनस एच की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी वैल्यू जानी चाहिए, क्योंकि fx, अब देख fx क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x था। अगर तू F1 माइनस एच निकालना चाहता है तो बेसिकली तूने x की जगह 1 माइनस एच पुट कर दिया, तो तेरे को यहां पे भी x की जगह 1 माइनस एच लेके आना पड़ेगा। तो तूने यहां पे रख दिया ये इस तरीके से, इसकी वैल्यू ये बन जानी चाहिए। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है कि अगर लेट्स से तू यू पुट एनी, यू गिव एनी वैल्यू, एनी इनपुट टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये उसको कन्वर्ट कर देगा किसी इंटीजर में। कौन से इंटीजर में? तो अगर तूने इसके अंदर वैल्यू रखी 1.3, तो जो भी तू इसके अंदर वैल्यू रख रहा है उससे जस्ट छोटा इंटीजर में ये कन्वर्ट कर देता है, यानी कि 1 में कन्वर्ट कर देगा। तूने इसके अंदर वैल्यू रखा 2.7, ये वैल्यू दे देगा निकाल के तेरे को 2। तूने वैल्यू रखा 4.5, ये वैल्यू दे देगा 4। तूने इसके अंदर वैल्यू रखा 4, तूने कोई इंटीजर ही रख दिया, तो इंटीजर रख दिया तो इंटीजर ही आंसर दे देगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इंटीजर है ही। तो ये जो बिग ब्रैकेट्स हैं इनका काम है इंटीजर आंसर देना। कौन सा इंटीजर? जो जस्ट छोटा इंटीजर है उस वैल्यू से। और अगर अंदर वैल्यू इंटीजर ही दे दे तो आंसर सीधा का सीधा ऐसे ही बाहर आ जाएगा। तो बताएगा मेरे को इसका आंसर 0.07 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा? जो इससे जस्ट छोटा इंटीजर है, बिल्कुल 0। तो अब यहां पे आ जाए, देख इसकी वैल्यूज निकाली हुई है हमने। तो जब मैंने ये अंदर रखा 1 माइनस एच, तो h की वैल्यू बहुत छोटी सी है, लिमिट h टेंड्स टू 0 को जा रहा है, यानी कि h बहुत छोटा सा है, पर 1 से तो छोटा ही कर देगा ना इस नंबर को 1 माइनस एच। 1 माइनस एच की वैल्यू होगी समथिंग लाइक 0.99999। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन जाएगा 0। आंसर आएगा 0 माइनस, अंदर है 1 तो 1 का 1 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई माइनस एच। ऊपर बना -1, नीचे बना माइनस एच, माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, आंसर आया 1 अपॉन एच। तूने h को 0 रखा, आंसर इंफिनिटी बन जाएगा। और सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी सॉल्व करा है, बस एक चीज चेंज हुई है, देख यहां पे इस बार 1 प्लस एच हो गया। 1 प्लस एच का मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, समथिंग लाइक 1.0001। 1.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 1। तो इस बार आंसर आ गया 0। तो बेसिकली हमने LHD निकाला, RHD निकाला, and we tried to find out whether they are equal or not. If they are equal, then the function is differentiable. If they are not equal, then the function is not differentiable. Now you have to repeat this process for x is equals to 2. Not right now. Now, can I remove this? Jan, did you understand this? Like, how would we solve this? The process. Okay, cool. So, can I remove this? Okay.
if I have to check for continuity, so I have to check LHN, RHN, left hand limit, right hand limit, and value of function at given point. कभी हम इसका क्वेश्चन करेंगे आगे सॉल्व, तो हम आपको बता देंगे, कोई भी प्रॉब्लम लेके आना, उसके थ्रू वी कैन सॉल्व दिस. Now one more thing of which I want to tell you is you have to remember this thing, okay? This is important. Like this is very basic thing, not a very big deal to deal with. So this is the graph of y is equals to mod x. जब हम y is equals to mod x का ग्राफ बनाते हैं तो वो v शेप का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का. y is equals to mod x को हम x लिख सकते हैं अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. ये आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. अगर किसी को प्रॉब्लम है आई कैन एक्सप्लेन दिस, नो वरीज. बस मोटा मोटा ये यही बोलना चाहता है कि अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो ये एज इट इज बाहर निकाल देगा उसको, यानी कि mod of 4 is 4 या mod of any positive number is that same positive number. बट अगर आप इसके अंदर कोई भी माइनस नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो ये उसको पॉजिटिव करके बाहर निकालता है. इसका आंसर मॉड्यूलस का हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव आंसर नहीं होगा मॉड्यूलस का. Now how it is doing this, how modulus is changing this negative number to positive number, what's the logic, कैसे ये चेंज कर रहा है, उसके लिए ये लॉजिक के लिए आपने डिफाइन करा है कि देखिए अगर आप इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर रखते हैं तो ये क्या करेगा, जब आप मॉड्यूलस को हटाओगे तो ये उससे पहले माइनस लगा देगा, उस नेगेटिव नंबर से पहले माइनस लगा देगा जिससे कि वो पॉजिटिव बन जाए. ये इस लॉजिक से इसको पॉजिटिव बनाता है. तो यहाँ पे भी यही बोला गया है कि देखिए अगर इसके अंदर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर रखते हैं तो वैल्यू होगी जो भी नंबर है. बट अगर आप इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर रखते हैं तो नेगेटिव नंबर के साथ आपको माइनस लगा के ओपन करना है पहले. तो लेट्स से इफ यू पुट -4 you will solve this like minus of -4. अब आइए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं. यहाँ ये पॉइंट है x is equals to 0, दिस पॉइंट. अगर आप x is equals to 0 की बात करते हैं तो आपकी दो टेंजेंट बन रही हैं इस पॉइंट पे. एक ये टेंजेंट, इस पॉइंट की मैं बात करूं, दो क्या तीन बन रही है इनफैक्ट. एक तो ये x एक्सिस टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, एक ये भी टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और एक ये भी टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है. बेसिकली तीन टेंजेंट बन रही है इसी पॉइंट पे. सेम पॉइंट हैज 3 टेंजेंट्स. which certainly means that the function is not differentiable at x is equals to 0. क्योंकि you can draw more than one tangent. It means that it's differentiable, its LHD and RHD both have different values. तो ये फंक्शन देखो कंटिन्यूअस है. mod x is continuous at x is equals to 0. But not differentiable at x is equals to 0. आप इसको प्रूव भी करके देख सकते हैं यही LHD RHD के कॉन्सेप्ट से. वो आपका होमवर्क होगा, आप खुद करेंगे, ना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा जरूर. और दूसरी बात याद रखने वाली क्या बात है कि देखिए दोस्त, जब भी ग्राफ पे शार्प पॉइंट बनेगा, कोई एज बनेगा, कोई एज से मेरा मतलब है नुकीला, कुछ भी शार्प पॉइंट, तो जैसे ही कोई भी शार्प पॉइंट बनेगा ना, पहली बात तो शार्प पॉइंट कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा जहां से ग्राफ वापस मुड़ जाए. ये शार्प पॉइंट नहीं है, दिस इज स्मूथ कर्व, राइट. बट दिस वाज अ शार्प पॉइंट, नुकीला पॉइंट है, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, कुछ भी. ये शार्प पॉइंट नहीं है, नो. ये है, ये नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब शार्प पॉइंट है. तो कोई भी शार्प पॉइंट अगर ग्राफ पे बनता है, ग्राफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट.
तो आपको कोई भी ग्राफ दिखाया गया और पूछा जाता है कि ग्राफ कितने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, जितने भी एज बन रहे होंगे, जितने भी शार्प एज बन रहे होंगे, वी शेप्ड एज, आप ये चीज याद रख सकते हैं, ग्राफ से ही सीधा सीधा देख के बता सकते हैं कि फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल होगा, कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। So this was all about differentiability, continuity and differentiation. We have already solved differentiation in the previous class. Yes. So today we will be going for some exclusive differentiation, like sorry. So we will be covering actually two topics in differentiation. First is logarithmic differentiation, and second will be parametric differentiation. Am I audible, everyone? Yes, sir. Okay, so before going for logarithmic differentiation, we just need to know first some of the rules of logarithm. So this is a very important topic, first of all, especially for JEE, anyone who is preparing for JEE. You will be facing certainly one question for logarithm. This is sure. There will be a question based on logarithm. Now, logarithm can be involved in many topics. That is why it is important. Because logarithm can be involved in trigonometry, can be involved in algebra, can be involved in calculus, whatever you take. Logarithm can be used anywhere. Logarithm and trigonometry. These are two things which you need to really work hard on, because they can be clubbed with any of the topic. And certainly you need to know about the logarithm, properties of logarithm, and the domain and range of logarithm. That was very important in relations and functions. So let me understand you. What is logarithm? So in the last class, we were talking about logarithm, like what does logarithm represents is, अगर आपने लिखा है y is equals to log x to the base a, तो आप पहले बहुत छोटे छोटे सिंबल्स का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए। y होगा आपका आउटपुट, x होगा आपका इनपुट और a होगा आपका बेस। लॉगरिथम कोई भी तभी डिफाइन हो सकता है अगर आप उसको पॉजिटिव इनपुट दें, यानी कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए यहाँ पे, एंड a ग्रेटर देन 0, बेस भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस की वैल्यू 1 भी ना। गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट। कोई भी लॉगरिथम तभी डिफाइन हो सकता है जब उसका इनपुट पॉजिटिव हो, जब उसका बेस भी पॉजिटिव हो और उसके बेस की वैल्यू 1 ना हो। मींस अगर मैं आपके सामने ये लिखता हूं log -4/2, तो वैसे तो इसका आंसर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बात बता दूं, पर अभी के लिए आप ये बोल सकते हैं कि जी ये तो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो सिलेबस से बाहर है, आपको कभी नहीं दिया जाएगा ये, दिस इज सेंसलेस फॉर यू। बट जस्ट फॉर द नॉलेज पार्ट, इसका आंसर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कैसे आएगा वो भी हम निकाल सकते हैं, बट यू नीड नॉट टू नो अबाउट दैट। सो log of -4/2, this for me right now is senseless। कभी नहीं पूछा जाएगा मुझसे ऐसा कुछ भी, या फिर इस तरीके की कोई भी चीज। दिस अगेन इज सेंसलेस, क्योंकि इसका बेस 1 हो गया। दिस अगेन इज सेंसलेस, इन बातों का कोई मीनिंग नहीं है। इट लॉगरिथम इज मीनिंगफुल
only when the base and input is positive and base is not equal to 1. अब अगली बात करते हैं, व्हाट डज लॉगरिथम रिप्रेजेंट? लॉगरिथम रिप्रेजेंट करता है दोस्त बेस की कौन सी पावर इनपुट होगा। कल भी हमने छोटी सी बात की थी इस बारे में। चलिए एक एग्जांपल से हम बहुत ही क्लियरली इस बात को समझ सकते हैं। तो लेट से मेरे सामने लिखा हुआ है log 8 बेस 2। मुझसे बोला गया log 8 बेस 2 क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आंसर दूंगा कि देखिए इसका आंसर होगा, इस पूरी वैल्यू का आंसर होगा बेस की कौन सी पावर इनपुट बनेगी, यानी कि 2 की जो भी पावर 8 बना दे वो पावर आंसर है इसका। क्या होना चाहिए फिर आंसर? विच पावर ऑफ 2 इज 8? अगर आप 2 की पावर्स लेते हैं तो लेट्स से आपने 2 की पावर 3 ली। what is 2 to the power 3? 8. 8. So that 3 is the answer of this law. That power is the answer of this law. जो भी बेस का पावर इनपुट बना देगा वो पावर आंसर हो जाएगा। तो लेट्स से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी, बताएंगे आंसर? आंसर होगा 4 का कौन सा पावर 64 बनेगा? 3. तो 3, तो that 3 is the answer. इसमें बताओ 81 बेस 3 4. करेक्ट। अच्छा चलो फिर ये बताओ Senseless. not senseless. You cannot say senseless. Senseless will be when we have base, either base or input negative or base is 1. ना ही तो बेस नेगेटिव है, ना ही इनपुट नेगेटिव है, ना ही बेस 1 है, तो सेंसलेस तो नहीं है। हाँ तो ये जरूर कह सकता है कि मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। एम आई करेक्ट? Yes, sir. क्योंकि मेरे पास, मुझे नहीं पता 2 की कौन सी पावर 7 बनेगी। मतलब ये पता है कि वो पावर 3 से छोटी होगी, ये भी पता है कि वो पावर 2 से बड़ी होगी, पर क्या होगी हाँ ये नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे। जैन, रिशान, अफीफा, do you guys understand this? Yes, sir. तो log 7 बेस 2 को मैं डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता, बट आई डू नो द आइडिया कि किस तरीके से log 7 बेस 2 लिखा गया है, एंड फ्रॉम दैट आइडिया आई कैन कैलकुलेट द रेंज ऑफ दिस log 7 बेस 2। मेरे को पता है ये 3 के बहुत पास होगा, क्योंकि 2 to the power 3 8 बन जाता है। तो उसका मतलब ये है कि log 7 बेस 2 बहुत ही क्लोज है 3 के, पर क्या है एग्जैक्टली ये नहीं पता यार, राइट? तो हर बार भी नहीं निकाल सकते, बट कॉन्सेप्ट ये है, आइडिया ये है कि पावर, जो भी बेस की पावर इनपुट बना देगी वो पावर आंसर है। तो ये तो सबसे पहले हुई हमारी लॉगरिथम की बात। अब बात करते हैं यार इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। चलो फिर सबसे पहले तो आप 2 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। बेस्ड ऑन जो आपने पढ़ा, बिल्कुल सब चीजें उस पर बेस्ड है। हाँ जी, तो ये लिखा हुआ है log a to the base a। ऑब्वियसली a तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, एंड a की वैल्यू 1 के बराबर भी नहीं होगी, वो कंडीशन तो हमेशा है ही कि आपका बेस और इनपुट दोनों पॉजिटिव भी होना चाहिए और बेस की वैल्यू 1 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। बट कैन यू गाइस अप्लाई जो भी अभी आपने सीखा, कैन यू अप्लाई दिस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log a base a? No, 1. Why? So because log, for example, log 2 base 2, ठीक है, 2 has the power of 1, so it will be 1. बिल्कुल, तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि भाई देखिए यहाँ पे बेस और आपका इनपुट, सॉरी इनपुट एंड बेस, इनपुट एंड बेस दोनों सेम है।
राइट। अगर दोनों सेम है तो मैं यही तो जानना चाहता हूं कि a की कौन सी पावर a बनेगी। तो यार a की तो पावर 1 ही होगी जो a बनेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल लिया कार्तिक ने कि आप ये ले लीजिए log 2 बेस 2। तो हम यही तो जानना चाहते हैं कि 2 की कौन सी पावर 2 बनेगी, 1 ही होगी ना। तो अगर कभी भी आपका बेस और इनपुट दोनों बराबर है तो आंसर 1 हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है, अभी ये भी क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने log -2 बेस -2 लिखा तो इसका आंसर मैं 1 बोल दूंगा। नो, दिस इज स्टिल सेंसलेस, दिस इज स्टिल सेंसलेस। कि भाई आपने तो नेगेटिव वैल्यूज रख दी ना अंदर। बट हाँ, आपको कभी ऐसा दिया भी नहीं जाएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। पर डोमेन रेंज के टाइम पे ये सब चीजें काम आएंगी जो मैं भी बता रहा हूं। खैर, यहाँ ये अगला क्वेश्चन, log 1 बेस a कह रहा है कि अगर इनपुट को 1 कर दें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं। हम बेस को 1 नहीं कर सकते पर इनपुट को तो कर सकते हैं भाई। 1 कर दिया मैंने 1। तो log 1 बेस 2 हम जानना चाहते हैं बेसिकली 2 की कौन सी पावर 1 बनाएगी। 2 की 0. क्या पावर लूं कि 1 बन जाए। करेक्ट, 0। तो whenever the input is 1, answer will always be 0, क्योंकि a की पावर 0 ही 1 बना रही होगी। किसी की भी पावर 0 इज इक्वल टू 1। और थर्ड प्रॉपर्टी, लॉगरिथम के अंदर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सब्ट्रैक्शन और एडिशन में चेंज हो जाता है। आप समझिएगा मेरे साथ इसको। ये क्या लिखा हुआ है, log mn। mn माने तो कोई दो वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में लिखी गई है इनपुट के अंदर और बेस है a। तो दिस कैन बी रिटन एज log m to the base a plus log n to the base a, provided m, n, a are greater than 0. They have to be greater than 0, otherwise the log is senseless. And a is not equal to 1. And this division will get converted to subtraction if we distribute the log. तो log m plus log n, दो log को ऐड कर सकते हैं आप अगर उनका बेस सेम है। और ऐड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे अंदर जाकर। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट दिस एज, I mean, if I write a log as, so I'm trying to add two logs here of whose bases are same. दो log को add या subtract आप तभी कर सकते हैं जब उनका बेस सेम होगा। मैंने देखा यहाँ पे दो log दिए हुए मेरे को, दोनों का बेस 4 है, तो I can certainly add them या subtract them। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप अंदर वाले इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा log 18 बेस 4. करेक्ट। इसका आंसर बताओ फिर। चलो log 1. करेक्ट। तो ये हो जाएगा, देखो अभी ये माइनस कर रहा हूं मैं, तो पहली चीज तो मैं माइनस कर सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूं क्योंकि बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो अंदर वाला इनपुट डिवाइड में चला जाए, ये वैल्यू बनेगी देखो 4। आंसर आया log 4 बेस 4 which is 1। तो ये चार तो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज है। देन फिफ्थ इज बेस चेंजिंग फॉर्मूला। फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ इज कि अगर आपने log m टू द बेस a लिखा हुआ है तो आप इसी को 1 by log a टू द बेस m लिख सकते हैं। आप साथ साथ इन सबके एग्जाम्पल भी लिखते जाइएगा भाई, मैं इसीलिए लिख रहा हूँ या आपके लिए लिखे जा रहे हैं। सो लेट्स से आपने लिखा log 7 बेस 4, तो आप log 7 बेस 4 को 1 by log 4 बेस 7 भी लिख सकते हैं।
ये पहला बेस चेंजिंग फॉर्मूला है, फिफ्थ का ए पार्ट है। अभी हम फिफ्थ का बी पार्ट करते हैं। कैन आई रिमूव ऊपर वाली दीज टू लाइंस? Yes, sir. अगर किसी ने नहीं लिखा है तो जस्ट हैंड रेज कर दो प्लीज। ओके, फिफ्थ का बी प्रॉपर्टी होगा, यहां पे तो आप ए और एम को ही एक्सचेंज कर रहे हो सिर्फ, पर फिफ्थ का बी प्रॉपर्टी क्या कहता है आपसे कि आप किसी भी लॉग का बेस चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने लॉग एम बेस ए लिखा हुआ है तो आप उसको लॉग एम अपॉन लॉग ए लिख दीजिए, और बेस जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। ऑब्वियसली पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। तो दोनों से आप बेस चेंज कर सकते हैं। यानी कि कहना मैं ये चाहता हूं कि आप log 7 बेस 4 को एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, बट आप log 7 बेस 4 को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, log 7 डिवाइडेड बाई log 4। और जो बेस लेना चाहते हो ले लो, बट दोनों का लेना होगा। 5 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 10 10 50 50 जो चाहो वो ले सकते हो, बट दोनों का सेम बेस रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। हाँ जी, आगे बढ़ सकते हैं क्या? कोई बच्चा है तो प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए। Sorry. Okay, last two properties now. So the sixth one says कि आप पावर्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो लेट्स से आपने लिखा हुआ है log b to the base a। देखिए b अब इनपुट है, पहले m इनपुट था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो बस एक नंबर से, मैं तो एक किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ इनपुट। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर आपको इनपुट की कोई पावर दी गई है या बेस की कोई पावर दी गई है, तो आप उस पावर को बाहर निकाल सकते हैं। जो इनपुट की पावर होगी वो न्यूमरेटर में बाहर निकलेगी, जो बेस की पावर होगी वो डिनोमिनेटर में बाहर निकलेगी, और आप इसको log b बेस a लिख सकते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं ये देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो लेट्स से आपके सामने लिखा हुआ है log, एक सेकेंड, log 27 बेस 8। तो आप इसको दोस्त सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? आप इसको पावर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। आप इसको लिख सकते हो, 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3, और 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3। तो आप पावर्स को बाहर निकाल सकते हैं। ये 3 भी बाहर आ जाएगा, ये 3 भी बाहर आ जाएगा, कुछ 3/3 करके बच, और अंदर बचेगा log 3 बेस 2। 3/3 बनेगा 1, तो ये बन जाएगा log 3 बेस 2। इस तरीके से आप किसी भी लॉग को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या आप मुझे इसे सिंप्लीफाई करके बताएंगे एक बार? ये देखो जरा, निकाल पा रहे हो कि नहीं, चेक करो। log 16 base 32, can we simplify this?
Yes, sir. बिल्कुल बताइए फिर मुझे क्या आंसर आ रहा है। Sir, we can say log 2 power 4 base 2 power 5. करेक्ट। And then 4 by 5 log 4 by 5 1. 4 by 5. 4 by 5. यस करेक्ट। 4/5 should be the answer. अफीफा रिशान जैन, did you guys get this? ट्राई करो पहले, चलो। This is not tough. You're just doing the properties. जितना प्रोफिशिएंसी से आप इन प्रॉपर्टीज को लगाना सीख जाओगे उतना ही अच्छे से आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी पता होगा। पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज ही यूज करना है डिफरेंशिएशन के अंदर जाके। डिफरेंशिएशन करना आपको आता है, इन प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएशन के साथ कैसे यूज करना है यही सीखना है। तो चलिए यहीं से शुरू हो जाइए, इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से सीख लीजिए अभी मेरे साथ साथ। आप 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, देखिए क्या आप उसे किसी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, देखिए उसे किसी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 to the power 4, 32 को आप लिख सकते हैं 2 to the power 5। अब आप पावर बाहर निकाल सकते हैं। इनपुट की पावर है 4, बेस की पावर है 5। इनपुट निकला बाहर, बेस भी निकला बाहर, ये हो गया log 2 base 2। log 2 base 2 माने तो 1, ये आपने अभी पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यानी क्या आंसर हुआ 4/5। एक और बात दोस्त, आप अकेले अकेले पावर भी बाहर निकाल सकते हैं, ये नहीं कि हमारे पास दोनों की पावर होनी चाहिए तभी बाहर निकालेंगे। What I mean to say is कि let's say if I write something along the line this, so this is log 9 base 7। मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, कितना और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ओके, तो मैंने देखा कि सबसे पहले मुझे देखना चाहिए पावर्स क्या, मतलब मैं 9 को क्या पावर में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। और 7 को, 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 को आप किसी की पावर में नहीं लिख पाओगे, यानी कि ये बन जाना चाहिए। अब यहां पे मैंने देखा कि इनपुट के पास पावर है, बेस के पास नहीं है, तो भाई बेस के पास पावर 1 तो हमेशा है ना। अगर बेस के पास पावर 1 हमेशा है तो आप निकाल लीजिए, ऊपर ये 2 आएगा, नीचे से 1 आएगा, तो सिंपल सिंपल आप बस अपने 2 को बाहर निकाल लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अकेले 2 को भी बाहर निकाल सकते हैं, मतलब अकेली पावर को भी बाहर निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा। कैन यू सॉल्व दिस फॉर मी? कितना सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख सकते हैं बताना जरा। सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका आंसर क्या होगा? log 10 base 60। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले पावर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए इन दोनों नंबर्स को, क्या हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। जो नहीं हो सकता उसका तो कुछ नहीं कर सकते, बट जिसको पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं सबसे पहले उसे पावर में कन्वर्ट कर लीजिए, सिंप्लीफाई करिए, आंसर बताइए। नो बच्चे, log 1 is 0 but this is not log 1। is this log 1? No, this is log 2 base 2। log 2 base 2 is 1, so 4/5 into 1, the answer is 4/5। Afifa, did you get it? log 1 is 0, correct, but this is not log 1। okay, okay, let me हाँ सर। Karthik, आया आंसर? हाँ सर। just give me a minute, wait। Yes. Afifa, let's see, no, it will be 1, not log 1। log 2 base 2 is 1, simple।
This is not log 1. Log 1 is 0. Yes, you are correct, but this is only 1. तो अभी अपन यहाँ पे log सॉल्व करेंगे तो 2 का कौन सा पावर 2 बनेगा, 1 बनेगा, तो आंसर 1 आ गया। अगर log 1 होता तो बिल्कुल आंसर 0 हो जाता। हाँ, या कार्तिक नाउ। Sir, we can write it as log 10 base 2 power 4, and we ठीक है, can write it as 1/4 log 10 base 2, बेस 2, ठीक है, and then we can convert log 10 to log 5 base 2 plus log 2 base 2. करेक्ट। तो फाइनल आंसर मुझे बता दो, यही मैं आंसर जानना चाहता था बस। 1/4 whole into log 5 base 2 plus 1. करेक्ट। तो गाइस वी कैन राइट दिस। 10 को तो हम किसी की पावर में चेंज नहीं कर पाएंगे। 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5 मैक्स। एट मैक्स यू कैन राइट 10 as 2 into 5। पावर नीचे डिनोमिनेटर में बाहर आती है, बेस की पावर डिनोमिनेटर में बाहर आएगी, इनपुट की पावर न्यूमरेटर। सो दिस इज 1/4 log 10 base, right? Now this 10 can be converted into 2 into 5. So this is nothing but 1/4 log 2 into 5 base 2. Now, why am I doing this? Because I have seen the base is 2 and this can also be written as 2. तो मैंने फिर थर्ड प्रॉपर्टी लगाया और थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करते हुए I can write this as log 2 base 2 plus log 5 base 2. दो चीजों का प्रोडक्ट लिखा हुआ था, अलग अलग कर दिया। उसने क्या किया, उसने इस वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया। दिस इज नथिंग बट 1 log 2 base 2 and this is log 5 base 2. So the answer should be this. But powers हम बाहर निकाल सकते हैं। And the last rule is कि अगर आपको कभी भी log पावर में दिया हुआ है तो आप a को और b को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि you can write this as b log a to the base c. I'll explain you क्या हमने किया है। तो लेट्स से मेरे को ऐसे दिया जाता है 4 log 6 base 16। कभी भी दोस्त पावर में log है तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर पावर में log है तो मैंने देखा 4 की पावर में log दिया हुआ, तो मैं 4 और 6 को आपस में एक्सचेंज कर सकता हूं। These 4 and this 6 इनपुट और जिसकी पावर में लिखा हुआ है उन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि आप इसे लिख सकते हो अब आओ देखते हैं क्या बन सकता है। चलो मैं इसे थोड़ी देर के लिए 9 कर दे रहा हूं, मतलब उससे थोड़ा अच्छा सा आंसर आ जाएगा इसलिए कह रहा हूं। तो 4 और 9 को मैं आपस में एक्सचेंज कर दिया। अब क्या करें, अब पहले इस लॉग को सॉल्व करते हैं। चलो यहां करके दिखा। तो भाई मैं इसको पावर में लिख सकता हूं क्या, 2 को 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 16 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4। पावर्स बाहर निकाल दी, ये 2 है, ये नीचे वाली 4 है, अंदर क्या बचा log 2 base 2। log 2 base 2 is nothing but 1, यानी कि आंसर क्या आया 2/4। 2/4 का मतलब 1/2, ये आंसर। तो ये पूरा log सॉल्व होके 1/2 आंसर देता है। और देना भी चाहिए ना भाई, 16 की कौन सी पावर 4 बनेगी, 1/2। रूट ऑफ 16 इज 4 और रूट का मतलब पावर 1/2। तो यही तो पूछा था 16 की कौन सी पावर 4 बनेगी, 1/2 पावर 4 बनेगी।
यानी कि आंसर आया 9 की पावर 1/2, which means that √9 आंसर इज 3. तो जब जब मेरे पास लॉगरिथम पावर में होगा तो मैं ये कर सकता हूं हर बार. These are all the properties of logarithm. कल हम नेक्स्ट क्लास में मतलब हम लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन खत्म कर देंगे और साथ साथ आपको एक तरीके का डिफरेंशिएशन और पढ़ाना है, वो भी खत्म कर लेंगे. देन वी विल स्टार्ट विद एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. Types of differentiation, please feel free to ask. So you can come with your problems in the next class also. Right? Now this class is over. If you have any problem, you can ask. If you want to ask anything. Okay. In that case, you can leave the class. Thank you, sir.